Students, my video is not clear. Students, please post for him so that he can see it. You can text it for all. Is the video fine? And that's what I asked you all. Is the audio and video fine with all of you all? The video is a little blurry. Kevin says no, the video is fine. What about the rest? Rest of the students, please make it very clear. Is the video fine? It's a little blurry, sir. Little blurry. Okay. We can make it out, but it's blurry. Okay. Now it's fine. No, it's the same. It's the same. How is it possible? Now it's fine, students. No, sir, it's the same. So maybe you can use the front camera. Sorry, the behind camera, the one which you click pictures, and not the front camera. It might change. Okay, just hold. No, that's true. That's true. That's fine. It's a little better, but it's still a little blurry. Yes, sir. Now it's good. Sure? Yes. Yes. Okay, fine. Okay, fine, Aman. Thanks. ये जो concept मैं बता रहा हूँ students, see, you have learned it in a lower standard, so that when I'm going with current electricity students, I will not speak much onto this. Are you getting it? Because all of you all have learned it in that case, and I'll be just trying to emphasize onto something rest of the part of it. Okay, so we pick up the concept which already you've learned, and I'm just trying to show it to you something more into this. Is that clear? Now, when I speak about current electricity students, EMF we consider. So students, in this case, E stands for EMF. The word EMF, students, stands for electromotive force of the cell. So I'll put for this is simply about its electromotive force of a cell. Where capital R is a resistance we consider. Capital R is the resistance, and it's a fixed resistance we consider. Small r we consider is the internal resistance of a cell. And students, internal resistance is always drawn very close to the negative terminal. So I can show it in this manner. This is a long stock positive. Short and thicker one is a negative I'll consider. And I'll show a resistance very close to. And this is my internal resistance with dotted line. This is I'm going to show the internal resistance. That doesn't mean you can draw it on the positive side. Students, you can draw it on the positive side also. Again, screen is blurred or what? No, sir. Like it's a little, it's better, but not as worse as it was before. Now it's fine, students? Yes, sir. Is it fine? Yes, sir. Yes. Okay, got it. The reason behind it, I got it. Okay. Okay, students. So I was speaking about your E stands for electromotive force of the cell, students, and that's EMF we consider. R is the resistance, and that's a fixed resistance. Every electrical gadget into your home is considered as a fixed resistance, and it allows fixed current to flow through it. Small r is an internal resistance, students, and internal resistance always strong, very close to the negative terminal of the battery. You can also show it on the positive side also.
If you happen to go refer certain good reference books, students, you might come across internal resistance यहाँ पे भी दिखाते हैं. But whenever you see all such books which you are solving for multiple choice question, whether you go through your HCV or you go through your different CBSE or ISC books, you might come across internal resistance drawn to the negative terminal we consider. The capital I stands for electric current. E stands for electric current flowing through the conductor we consider. Okay. Now, when I speak about for electric current, can you give me the general formula for current, students? V by R. So I is equal to what? What you said it? V by R. Q by delta T. I see somebody has given the formula I is equal to its dq by dt. Some will give me I is equal to q by t. Some is going to give me I is equal to v by r. Some is going to be I is equal to E upon capital R plus small r. See, so many formulas are written it for electric current, students. Okay. So when you speak about for the mathematical relations for current, students, see the formulas are given. I is equal to dq by dt, I is equal to q by t, I is equal to v by r, I is equal to E upon capital R plus small r. Now tell me, students, when exactly I'm going to use I is equal to dq by dt? Flow of charge is not constant. Pardon? Flow of charge is not constant. This is used, of course, when you say that is a small amount of charge is flowing for a small interval. That means, can I say this is actually nothing but a limiting ratio? It's a limiting ratio of infinitesimal charge flowing through a given cross section of a conductor for a very small interval of time, and your time interval is tending to 0. So can I call this as instantaneous current? I is equal to dq by dt. That's instantaneous current. अगर मैं लिखता हूँ I is equal to q by t, तो ये होगा steady current. Are you getting it? I is equal to V by R, I'll simply use as a concept for Ohm's law. But this Ohm's law is practically applicable for what? Capital R मैंने लिया है, तो this is simply I'm considering for what? Considering your external resistance. Only external resistance, that means this part of the resistance. But if I run on I is equal to E upon R plus small r, and that is actually the general form. General form of Ohm's law as applied to complete circuit, students. So अगर complete circuit होगा, तो that will be capital R plus small r we consider. But capital R stands for the external resistance and small r stands for the internal resistance we consider. Every cell will have some internal resistance. Now, when I speak about for current versus time also, suppose if I happen to go, if I try to go for a device, that's also not use X and Y. Okay, suppose if I have a current and if I say I'm switching on the current in a particular device. So does the current reaches to a particular steady in how much time? So the steady value of current, students, the steady value of current in any fixed resistance, it occurs in a very short time. For example, if you take a tube light or if you take any of your electrical gadget into your homes, the time when you switch it on, there is growth of current. And at a particular instant, the current will then reach to its steady value. The time taken for the current to reach to its steady value is very small. It can be of the order a nanosecond also. Very small we consider. And then it reaches this steady current we simply call as I is equal to Q by T. So I was trying to consider that what is the mathematical relation for current? So there are several formulas we write down for current we consider. So I is equal to dq by dt, I is equal to q by t, I is equal to v by r, I is equal to E upon capital R plus small r we consider. Now, when I speak about these variables, E, what is this E over here? Simply we consider E stands for electromotive force we consider, students. Electromotive force in simple terms I'll consider will be the potential difference for complete circuit, students. Do keep this in mind. Capital V simply we consider is what is considered as a terminal voltage. Is the terminal voltage. For your concept in problem solving, you can also call this potential difference across, students, external resistance.
It's a potential difference across external resistance. That's terminal voltage. Small v होगा तो इसको हम बोलेंगे drop voltage, which many students must have learned it in the class 10th also. Drop voltage. That is, in simple terms, I can consider potential difference to overcome. Potential difference required to overcome internal resistance, students. That means listen carefully, students. Everybody listen carefully. Suppose if I try to go for a concept related to E, capital V and small v, तो ये है क्या? ये बहुत ही important concept है, students. Let us understand this in a simple way. Suppose if I take a beaker containing solution of dilute sulfuric acid. Okay. That means it has hydrogen ions. Of course, we write an H plus, but since I'm taking it two such ions, I'm writing H plus 2. And sulfate ions. Agreed? Dilute sulfuric acid. अब इसके अंदर मैंने क्या किया? मैंने दो plates immerse किए, students. You're getting it? I'm immersing. And this is simply, you must have come across in electrochemistry also, we consider. एक मैंने लिया है copper का और दूसरा मैंने लिया है zinc. Pure copper and pure zinc, I've immersed it into a beaker containing dilute sulfuric acid. यहाँ पे ना ही मैंने बैटरी कनेक्ट किया है, कुछ भी कनेक्ट नहीं किया है, और ये सिस्टम तुम्हारे सामने मैंने रख दिया. Now students, can you tell me what's going to happen after a certain interval of time? Do you find out any induced charge on the pure copper and pure zinc? And if so, why? Anybody? Is there any charge induced on copper and zinc? If so, why? Yes, anyone? Because of nature of metal plates. तो क्या होगा? Copper और zinc के बीच में क्या होगा? Pure solution of dilute sulfuric acid. तो क्या होगा? Varun? The medium is ionic, gets ionized, and charges flow. My dear, fine. I have taken a fluid which has free ions. Already it has free ions, my dear. I'm not explaining you the process of dissociation. Already there are free ions present inside this particular solution. It's a solution of simple dilute sulfuric acid, जहाँ पे hydrogen ions और sulfate ions freely available है. मैंने सिर्फ दो rods को immerse कर दिया, ये दो plates को immerse किया, pure copper, pure zinc. तो होगा क्या? तो तुरंत बोलेगा सर रिएक्टिव सीरीज में जिंक कम्स अबाउट. हाँ नहीं गलत जा रहा है. Who's this? सल्फेट कहाँ पे जाएगा? कॉपर के पास जाएगा कि जिंक के पास जाएगा? वरुण, रिएक्टिव सीरीज किसका बेटर है? हाँ, will sulfate will have a tendency to move towards copper or zinc? जिंक के पास जाएगा ना, है ना? तो रिएक्टिव सीरीज में जिंक is compared to be better as compared to copper. तो उसके साथ जिंक will combine with sulfate to form zinc sulfate. समझ में आ रहा है? यानी फ्री आयंस है ना, तो ये जिंक सल्फेट फॉर्म करेगा. जैसे ना उसने जिंक सल्फेट फॉर्म किया स्टूडेंट, तो क्या होगा? यहाँ पे दो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे. समझ में आ रहा है? वैसे जो हाइड्रोजन आयंस यहाँ पे गया, ये तुम्हारा कंसेप्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ पोटेंशियल डिफरेंस है. जैसे तुम कोई भी एक सेल लेते हो ना, फॉर एग्जांपल व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स यू मस्ट हैव कम अक्रॉस? देयर आर टू काइंड्स ऑफ सेल्स, यू मस्ट हैव लर्न इन लोअर स्टैंडर्ड. एक है प्राइमरी सेल और एक सेकेंडरी सेल है. अभी सिंपल शॉर्ट में बता रहा हूँ. प्राइमरी सेल्स, okay. Friends, again Kevin is saying, is the screen blurred again or what? Yes, sir. Sir, it randomly is blurred and then it becomes good. Then it again becomes blurred. Okay. Now there are cells if I have to consider two kinds of it, primary cell and secondary cell, students. Primary cells are those which cannot be recharged. जो तुम यूज एंड थ्रो होता है, जैसे नोवेनो बैटरी है, एवरेडी की बैटरी है, लाल कलर की जो बैटरीज है, ट्राई बैटरीज, जहाँ पे अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट होता है, वो प्राइमरी सेल्स है. सेकेंडरी सेल्स आर जनरली अल्कलाइन भी कंसिडर, एसिड अल्कलाइन बैटरीज भी कंसिडर, लिथियम बैटरीज भी कंसिडर, जिसको तुम रिचार्ज कर सकते हो.
एग्रीगेट लेड एक्यूमुलेटर्स वी कंसीडर, ये सारे सेकेंडरी है। तो हम पता करते हैं कि इनको पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आता है, कैसे वो पॉजिटिव और नेगेटिव क्रिएट होता है। तो यहाँ पे मैंने बोला जिंक कंबाइंस विद सल्फेट टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड टू चार्जेस नेगेटिव चार्ज आर इंड्यूस्ड। कॉपर के साथ में क्या होगा, सर जो हाइड्रोजन आयंस है, व्हाट्स गोना हैपन टू दिस हाइड्रोजन आयंस, these hydrogen ions will move towards the copper and what happens, they start getting discharged, getting it? यानी कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना, कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन्स कौन लेगा, हाइड्रोजन, ईच हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज ऑलवेज H+1 वी कंसीडर, लेकिन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और दैट इज बीन टेकन बाय हाइड्रोजन एंड व्हाट इज द फॉर्म, दे फॉर्म बबल्स, ऑफ कोर्स इट फॉर्म्स इनटू अ गैस। यानी कॉपर अपने 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के, तो व्हाट इज द चार्ज इंड्यूस्ड ऑन कॉपर, 2 पॉजिटिव। अभी ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, यानी हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि सर प्योर मेटालिक कॉपर में से, प्लीज एवरीबॉडी लिसन केयरफुली, प्योर मेटालिक कॉपर में से सर 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्लूइड में चले गए, चलो हाइड्रोजन ने ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो फॉर्म हो गया बबल्स में, गैस फॉर्म हो गया, आई गेटिंग इट, H+1 H+2 we consider and 2 electrons we consider to form a gas, we consider that is form। लेकिन लिक्विड में से 2 इलेक्ट्रॉन और डिस्चार्ज हुए जिंक पे, है ना, बिकॉज व्हेन जिंक कंबाइंस विद सल्फेट सो कैन आई से दैट 2 इलेक्ट्रॉन्स गेट्स डिस्चार्ज। यानी हो क्या रहा है, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स सॉल्यूशन में आए और वही 2 इलेक्ट्रॉन जिंक ले लिए। एग्रीड? क्या इतना क्लियर है सबको? इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes. So in that case, what exactly we consider? Now the charge induced on copper will be what? Gradually be positive. It will be positive. ये क्या होगा? Negative, negative, negative. Thereby what exactly you have set up? You have created a difference in potential. यानी तुम्हारा जो pure copper था, it has now got a positively charged we consider, and that is called as deficient of electrons, and this we call as high potential. लेकिन जिंक क्या है? Is excess of electrons, high concentration of electrons. इसको हम बोलेंगे low potential. Difference in potential causes what? A charge to flow. अगर सपोज इसको मैंने सील कर दिया, यहाँ पे तुम्हारा कनेक्टिंग पॉइंट्स डाल दिया, तो ये क्या हुआ मेरा? ये मेरा बैटरी हो गया। I can put into practice, I can use it. ना सपोज अगर मैंने एक बल्ब लिया, ओके, और ये बल्ब क्या है? What is this bulb? The bulb is a fixed resistance, क्योंकि उसके अंदर एक टंगस्टन फिलामेंट है। ध्यान से सुनो, उसके अंदर टंगस्टन फिलामेंट है, वो टंगस्टन फिलामेंट का लेंथ कांस्टेंट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो भी कांस्टेंट है, सर उसका रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल वो भी कांस्टेंट है। यानी उसको एक ऑप्टिमम करंट ही चाहिए होगा एट अ सूटेबल ऑप्टिमम वोल्टेज। अगर तुमने करंट परमिसिबल लेवल से बढ़ा दिया तो क्या होगा? वो ब्राइटली हो जाएगा, लेकिन बाद में इट विल फ्यूज ऑफ, द फिलामेंट विल ब्रेक। अगर उसको तुमने लेस करंट दिया तो व्हाट हैपेंस? वो ग्लो ही नहीं करेगा। सो दैट्स हाउ वी कंसीडर इन दिस केस। Now suppose if I happen to connect it to the 2 ends, if I connect it to these particular 2 ends, what's going to happen in these ends? If I connect it in these 2 ends, what exactly consider? So there will be flow of current. What is the flow of current we consider? The answer is सुनना, ये copper wire है, ये copper wire है, and this copper wire is what? Free of electrons. तो क्या होगा? Now this electron starts drifting. Electrons will move in this direction because this is the metallic conductor, students, and I made it very clear in electrostatics. What did I make it? What did I clear it with you all? If I take a copper conductor and place it into an external electric field, no field lines can pass through copper, but yes, current will flow through it. So what is the direction of electric field, students? The direction of electric field is from positive to negative. It's always outside the conductor. Electrons क्या होगा? Electrons are traveling inside the copper wire and they move from where to where, students? Electrons are going in the direction opposite to electric field and moves from a region of high concentration of electrons to a region of low concentration of electrons, and this is what we call as flow of current. So what is the cause for the electrons to flow? तो सबसे पहला cause क्या होना चाहिए? That there should be difference in potential. Which potential? Gravitational, magnetic, hydrostatic, या electric? It's an electric potential difference. How did we got an electric potential difference? So by considering with the batteries we consider. A battery gives you a necessary electric potential difference. Now once when you get an electric potential difference, do the charges flow? Yes. Which charge is set to flow? It's an electron which is flowing.
And this electron is flowing from where to where? From negative terminal to positive terminal. That means from low potential to what? High potential in the direction opposite to the electric field. But students, whenever we speak about current, do we show the flow of electrons? Tell me, students, do we show the flow of electrons? What is the direction of current? You must have learned in lower standards, 10th standard. What's the direction of current flowing? कहाँ से कहाँ flow होता है? Current का direction कहाँ से कहाँ होता है? Of course, Varun is conventional. That means from where to where? From positive terminal to negative terminal. तो ये क्या हुआ स्टूडेंट्स? ये है कन्वेंशनल करंट. कन्वेंशन का मतलब क्या? एक टाइप का assumption बोला गया है. लेकिन स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखना, ये assumption actually है क्या? हम ये जो डायरेक्शन बताते हो किसका बताते हैं? We are showing direction of electric field. Electric field is directed from positive to negative, and the electrons are flowing in the direction opposite to it. Yani students, always whenever we show current, we show the cause and not the effect. I make it very easy for you all. Tell me students, what is the cause for the electrons to flow? Chalo, electrons क्यों flow हो रहा है? तो तुम बोलोगे सर electric field की वजह से. Electric field का direction कहाँ से कहाँ है? Positive to negative. Electrons किस तरफ जाएंगे? Negative to positive. So will you show the effect or will you show the cause for the effect? That's why we are showing the cause. And this is what we named as conventional electric current. Now ध्यान से सुनना. ये दो electrons यहाँ पे चले गए. Then what happens? These electrons will move all the way, move to the zinc, move from the zinc plate to the copper wire. A part of the energy is considered to be utilized. Okay, again these two electrons, they transfer the energy. Now these two electrons will move further ahead, come back to the copper we consider. Again, it sends its electrons back into the solution. Means, can I say, ध्यान से सुनना, current externally and current internally remains the same. Current externally and current internally remains the same. तभी जाके students ध्यान से सुनना, 10th standard में जब भी कोई टीचर ने तुम्हें पूछा कि बच्चे लोग यहाँ पे बल्ब का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे दिखाओगे, तो तुम बोलते थे सर फॉर्मूला होगा V is equal to R into I. सिंपल फॉर्मूला. R इसका फिक्स रेजिस्टेंस, ये उसका पोटेंशियल डिफरेंस, और करंट ये है. वही फिर टीचर ने पूछा बच्चा व्हाट एग्जैक्टली द पोटेंशियल डिफरेंस फॉर द इंटरनल रेजिस्टेंस, तो तुम क्या करते थे? कैपिटल V की जगह स्मॉल v लिखते, कैपिटल R की जगह स्मॉल r लिखते थे. लेकिन करंट क्या लिखते? करंट क्या स्मॉल I लिखते? नहीं, यू रोट करंट एज कैपिटल I ओनली. व्हाट डज दिस मींस? Current externally and current internally remains the same. That means the rate of flow of electric charge, to the given cross section of the conductor externally is exactly equal to the rate of flow of electric charge to this particular electrolytic solution we consider. Therefore, we keep current constant. So now, see over here, you have the total potential difference across it we consider. What is the total potential difference across the 2 points we consider is potential difference of the complete circuit. If I want only the bulb to consider, then what is the voltage required, potential difference required for the bulb to glow? I'll call this as terminal voltage. For your easy way to do problems, you remember as potential difference for external resistance. And you need potential difference. स्टूडेंट्स में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए. अगर चार्ज को मोशन में लाना है तो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए. विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज करना फ्लो. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था इसके पहले. अगर तुम्हें ध्यान से मालूम हो तो मैंने बताया था, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स. मैंने बताया था ये चार्ज प्लस क्यू था, एक चार्ज इंफिनिटी पे था, मैंने यहाँ पे लिया एट पॉइंट ए, फिर उसी को मैंने बी पे लिया पॉजिटिव चार्ज. तो व्हाट डिड वी से? सर यहाँ पे हमें ज्यादा काम करना पड़ा, तो पोटेंशियल एट पॉइंट बी वाज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट पॉइंट ए. अगर मैं चार्ज को यहाँ पे छोड़ दूं तो क्या होगा? चार्ज मोशन में आ जाएगा कि नहीं होगा? So what is the reason for the charge to move? Because this was at high potential as compared to this. So what is the reason for the charge to flow? Electric potential difference. तो यहाँ पे अगर मुझे चार्ज को फ्लो कराना है externally in this particular tungsten filament, I need a necessary potential difference. And that I call as terminal voltage. Simple way से याद रखना है potential difference for external resistance. अभी दूसरी बात, सोल्यूशन के अंदर देखो,
हाँ सर, सोल्यूशन के अंदर भी तो आयंस फ्लो हो रहा है। ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, सोल्यूशन के अंदर भी तो आयंस फ्लो है। व्हिच आयंस आर देयर? सर देयर आर हाइड्रोजन एंड सल्फेट आयंस. Do these ions move to their respective electrodes? Yes, sir. Zinc has a high reactive series as compared to copper, so sulfate ions will discharge over there. Hydrogen ions will move towards copper. So, do these ions move? Yes. Movement of ions, motion of charge is current. Motion of charge is simply called current. यहाँ पे current flow है, हाँ हो रहा है ना current. उसको भी एक potential difference चाहिए. उस potential difference को नाम क्या दिया है मैंने? Potential difference over some internal resistance. उसको मैंने नाम दे दिया drop voltage. That means you have potential difference for the complete circuit. You have potential difference only for terminal voltage. You have potential difference only for internal resistance. We consider external resistance का मतलब क्या? Which all of you have learned. What is external resistance? So when these electrons are going to move, atoms are going to collide them. Such an opposition is called as an external resistance. Of course, that's an opposition to the flow of electrons, conduction electrons. जब भी ions अंदर flow हो रहा है, तो क्या इनको भी opposition मिल रहा है? Students, can you tell me, when this hydrogen sulfate ions are moving, are they getting opposed? Are they getting opposed inside the solution? Yes or no? Are these ions are getting opposed? Yes, Aman Rajan, absolutely correct. What you said it. Y series, the current remains the same. Absolutely, Aman. मुझे बताओ यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, यहाँ पे आता है तुम्हारा स्टूडेंट्स कंसेप्ट ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. ध्यान से देखना अभी. फॉर एग्जांपल ये सोचो कि मैंने 100 ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड लिया, चलो 100 ml लिया मैंने. 100 ml के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं H2SO4 के लिए. मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, क्या 100 ml में से जितने मॉलिक्यूल्स है क्या सारे डिसोशिएट हो गए? अरे सर, ये तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हुआ. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोशिएटेड टू द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इनसाइड द सॉल्यूशन, तो वो तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया. तो यहाँ पे क्या होगा सर? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के ऊपर डिपेंड है. यानी ये सोचो कि सपोज इस लिक्विड के अंदर 100 मॉलिक्यूल्स है. 100 में से मैंने बोला 70 मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट हो चुके एंड दे आर हैविंग हाइड्रोजन सल्फेट आयंस फ्री. अगर 70 डिसोशिएट हुए तो भाई बाकी 30 तो अभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में है कि नहीं है? वो 30 क्या करेंगे? इनको अपोज करना शुरू करेंगे. तभी जाके व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस? Internal resistance is a resistance offered to the flow of ions, by the electrolyte, flow of ions by the electrolyte within the electric cell or inside an electric cell is called an internal resistance of the cell. Of course, there's internal resistance, and that internal resistance, where exactly you show it? We always show closer to the negative terminal. क्योंकि वो अंदर है, उसको तुम दिखाओगे इन टर्म्स ऑफ क्लोज टू द नेगेटिव. कैन यू शो इट क्लोज टू द पॉजिटिव आल्सो? व्हाई नॉट? और ये जो तुम डॉटेड लाइन देखते हो ना, उसका मतलब कभी भी तुम सर्किट डायग्राम देखोगे और जहां पे भी तुम्हें बैटरी के आसपास ऐसा डॉटेड दिखाई दिया, उसका मतलब द बैटरी और द सर्किट हैज सम इंटरनल रेजिस्टेंस. क्या इतना क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? इज दिस मच क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल, all these 12 students who are right now, is it clear with everybody? Wait a minute. So then in this case, if the solution is infinitely dilute and the internal resistance will tend to, of course, I need to have high concentration of ions in that case. So it depends on the nature and concentration of the electrolyte also. I mean, absolutely correct. It depends on the nature and concentration of the electrolyte. चलो मैं फैक्टर्स भी बता देता हूँ ना, इंटरनल रेजिस्टेंस के पास. तो सबसे पहले प्लीज हम लोग ने क्या पे काम किया था? प्लीज एवरीबॉडी बी विद मी, लिसन केयरफुली. To start off with current, I'm not going somewhere of your 11th and 12th. I'm just picking up a concept of the lower start. 10th का ही concept मैं उठा रहा हूँ. Again, because the strength is very poor in that case, and that's the reason. Okay. तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ पहले E का मतलब क्या? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ये जो नाम बोल रहा है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. चलो अगर मैं पूछूंगा स्टूडेंट्स,
As per the name suggests, electromotive force of the cell, true or false? Is it the force supplied by the cell? Electromotive force of the cell, true or false? Is it the force supplied by the cell? तो क्या होगा आंसर? Electromotive force, is it the force supplied by the cell? Can anybody give me its answer? Come on, fast. As if we say force, a push or a pull. So is it the force supplied by the cell? Yes, come on. Aman, Vikram, Aman, Arvinda, Jagannath, Jatin, Kevin, Sarah, Priyank, Paramveer, Varun, Vaibhav. Students, okay, I'm getting the answers. Let's see. No, sir, it is a force required to cause the flow of current caused by the potential difference formed due to. Okay, students, जैसे नाम दिया गया है ना, electromotive force, it is not at all the force at all. It is simply the energy supplied by the cell. Electromotive force, as per the name suggests, students, it is not the force supplied by the cell. It is the energy supplied by the cell. To send a unit positive charge once around the complete circuit. अगर मैं electrons को यहाँ से यहाँ पे लेता हूँ, well, assume the conventional part once around the complete circuit. Complete circuit का मतलब क्या? External as well as internal. So please, ये गलत फहमी में कभी मत रहना. अगर किसी ने electromotive force का मतलब it's a force. No, not at all. There's an energy supplied by the cell. Energy किसको दे रहे हो? किसको दे रहे हो energy? ये cell किसको energy दे रहा है? सर सीधा हिसाब है इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगा ना भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स वायर के अंदर जा रहे हैं, उनको ऑपोजिशन है, वो अपना एनर्जी लूज कर रहे हैं, तो बैटरी उनको एनर्जी दे रहा है. ऑफ कोर्स पार्ट ऑफ द एनर्जी इज टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन्स टू मूव फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड. दूसरा, सर अंदर आयंस भी मूव हो रहा है, उनको भी तो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड जा रहा है, उनको भी तो ये अपोज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन अपोज कर रहे हैं, वो भी अपना एनर्जी लूज कर रहे हैं, उनको भी तो एनर्जी चाहिए. कौन दे रहा है? द बैटरी, द सेल. So electromotive force, as per the name suggests, it is the energy supplied by the cell to move electrons externally and for the ions to move internally. And simply, this is your textual language. For problems, use potential difference for the complete circuit. Complete circuit का मतलब क्या हुआ? External as well as internal. दूसरी बात, capital R is simply called as the resistance of the circuit, जिसको हम precisely बोलेंगे external resistance, which is also called as a fixed resistance. Every electrical gadget into your home is a fixed resistance we consider, which has a fixed current to flow through it. Current greater than the permissible value will dysfunction that particular device. Except your ceiling fan का जो regulator है ना, वो fixed resistance नहीं है, वो rheostat है. जो तुम्हारे सीलिंग फैन को या घर के अंदर शैंडलर है, सपोज अगर ड्राइंग रूम के अंदर शैंडलर लगा हुआ, डिमर्स बिठाया हुआ है, रेगुलेटर बिठाया है, जो ब्राइट करता है फिर डार्क कर लेता है, थोड़ा सा डिम कर लेता है, वैसे ही फैन को 1 2 3 4 4 3 2 1, तो वो चीज क्या है? वो है रियोस्टेट. दैट इज अ वेरिएबल रेजिस्टर. वी आर स्पीकिंग अबाउट इलेक्ट्रिकल एडजस्ट द फिक्स्ड रेजिस्टेंस वी कंसीडर. What is small r? It's an internal resistance. Internal resistance always within the battery we consider. What is I? Is a total current flowing. तो यहाँ पे जो I हम देख रहे हैं ना, ये I कौन सा है? सर I externally as well as I internally. तो इनमें से मैं कौन सा फॉर्मूला more often use करूंगा मेरे MCQs के लिए? ये वाला ज्यादा फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे external भी है, internal भी है. ये मैं कंप्लीट सर्किट के लिए, ये अगर सिर्फ मुझे बाहर का रेजिस्टेंस दिया तो उसके लिए ये यूज करूंगा, I is equal to V by R. ये when the current is steady for a given. If I consider instantaneous current, I is equal to dq by dt. That is why I is equal to E upon capital R plus small r is called as general form of Ohm's law as applied to complete circuit. Is this much clear with everyone? Please do reply. Yes. Students, clear? Sir? Yes. What have you written after PD for the E, like the definition of
terminal voltage. I've written PD, and after that something. A potential difference to overcome external resistance. You can write in potential difference across external resistance, potential difference across internal resistance, or you can write in to overcome external or to overcome internal. Agreed? Yes, sir. Okay, can I erase this, students? Can I erase this part? Can I erase this part, students? Of course, Sarah, coming to it. Sarah, I'm just coming to that. I'm coming to that. Sarah. क्या मैं erase कर सकता हूँ? हाँ या ना? Okay. Okay, students. Now, please pay attention, students. Since I said about EMF, terminal voltage, and drop voltage, I'll consider. Let us go for simple factors because even Sarah raised this. अगर suppose मैं तुम्हें एक external resistance देता हूँ, and a simple example I can consider is the wire which we use it. Getting it in our electric bulb, a tungsten filament. Getting it. So it has its own resistance we consider. So what are the factors on which resistance? अभी सबने 10th में पढ़ा हुआ है students. इसको एक simple तरीके से मैं याद रखने के लिए बोलूँगा. Remember the word MAR. शायद बहुत जन ने याद भी रखा होगा और भूल भी गए होंगे. What does MAR stands for? Material of the conductor. A stands for area of cross section of the conductor. L stands for length of the conductor, and T stands for temperature of the conductor. तो अगर किसी ने पूछा what are the factors on which external resistance of a conductor depends on the MAR. Of course, simple we consider. अगर मैं कॉपर लेता हूँ, ध्यान से देखना, अगर मैं कॉपर लेता हूँ और अगर मैं एल्यूमिनियम लेता हूँ, तो रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर इज लेस एज कंपेयर्ड टू रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम. तो the current carrying capacity in copper will be certainly greater than current carrying capacity in aluminium. अगर मैं कॉपर को कंपेयर करता हूँ गोल्ड के साथ में, तो क्या होगा? गोल्ड के अंदर रेजिस्टेंस और कम होगा, करंट कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगा. तो डिपेंड्स ऑन द मटेरियल. दूसरी बात है, जब भी मैं एक फैक्टर के साथ में बात करूंगा ना स्टूडेंट, तभी मैं एक फैक्टर को एक्सप्लेन करूंगा तो बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखना जरूरी है. सिंपल. तुम लोग ने जब भी पढ़ा होगा इन टर्म्स ऑफ विस्कस फॉर्मूला, ओके, फॉर न्यूटन्स लॉ. सो F इज इक्वल टू ईटा A dV by dx. तो जब भी तुम विस्कस ड्रैग के बारे में पढ़ते हो तो उस टाइम पे तुम किसी एक को कांस्टेंट रखोगे, यानी किसी बाकी तीन को कांस्टेंट रखोगे, किसी एक के साथ में हम छेड़ेंगे तो it's like that. So keep the rest of the factors constant. Does your resistance depends on the area of cross section? Simple. Yes. Okay, not done. Fine. Resistance is what? So resistance is inversely proportional to area of cross section. Of course, अगर तुम्हारा area of cross section बढ़ेगा तो resistance कम होगा. अगर area कम होगा तो resistance बढ़ेगा. Simple example. तुम्हारे घर के अंदर अगर तुम देखोगे तो have you seen the wires used for AC, for refrigerators, for electric iron, for electric oven? We use thicker wires. These gadgets are high current carrying capacity ones we consider. So उनका area of cross section बढ़ेगा तो resistance कम हो जाएगा. Then further, does it depend on the length also? Yes. Longer the wire, more the resistance we consider. Does it depend on the temperature? Yes. For pure metallic conductor, students, as temperature increases, resistance also will increase.
Copper metallic conductor, temperature increase, resistance. What are the factors in which external resistance depends? Mult. वैसे ही तुम्हारा internal resistance. Hello, internal resistance. For example, अगर तुम कोई नोमिनो सेल ले लो, चलो ये नोमिनो सेल लिया, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, agreed? And this is the distance between the two electrodes. There are two carbon electrodes inside it. What are the factors on which this internal resistance smaller depends? The factors on which यहाँ पे malt है, तो यहाँ पे remember malt. Bas. It's simple rhyme. What does N stands for? Nature and concentration of the electrolyte. Higher the concentration, more the free ions in that case. Nature and concentration. A, surface area of electrodes. अभी ध्यान से देखना, दोनों distance constant रखो. अगर सपोज मैंने इलेक्ट्रोड्स प्लेट फॉर्म में लिया, एक स्टूडेंट ने इलेक्ट्रोड्स सिलिंड्रिकल फॉर्म में लिया है और दूसरे ने प्लेट फॉर्म में लिया है, दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम है, कहां पे डिस्चार्ज ज्यादा होगा? सो सरफेस एरिया ऑफ प्लेट इज ग्रेटर, तो वहां पे क्या होगा? इट डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स. डज इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ? यस. अगर दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है तो क्या होगा? रेजिस्टेंस बढ़ेगा. डिस्टेंस कम होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा. तभी जाके ये वाले सेल्स नाउ हैव बीन रिप्लेस्ड बाय विच सेल्स? बटन सेल्स. हम लोग इसको बटन सेल बोलते हैं. डिस्क वाले शायद तुम्हारे रिमोट कंट्रोल्स में यूज होते हैं, रिमोट्स में यूज होते हैं, वॉचेस के अंदर यूज होते हैं. दोस आर फ्लैट सेल्स, डिस्क शेप, एक ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव. सी द डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल इन दैट केस. सो व्हाट एग्जैक्टली दैट इज डिस्टेंस. डज इट डिपेंड्स ऑन द टेंपरेचर? यस. टेंपरेचर बढ़ेगा तो व्हाट हैपेंस? मोर नंबर ऑफ फ्री आयंस वी कैन कंसीडर. So in this case, what exactly depends on to? It depends on to malt. This depends on to null, nature and concentration of the electrolyte, surface area of electrodes. Student, surface area of electrodes, distance between the two electrodes, and temperature of the electrolyte. Now, अगर किसी ने पूछा students, what about EMF? What are the factors in which EMF differs? ये ध्यान से रखना students. यानी इसका मतलब क्या मालूम है? एक स्टूडेंट को टीचर ने बोला भाई तुम लैक्लन सेल बनाओ. एक को टीचर ने पूछा भाई तुम डैनियल सेल बनाओ. I get it? So एक ने लैक्लन सेल बनाया, दूसरे ने डैनियल सेल बनाया, किसी ने कोई लेड एक्यूमुलेटर का बैटरी बना दिया, किसी ने कोई लिथियम बैटरी यूज किया. तो स्टूडेंट्स मुझे बताओ, ये सारों में क्या एक ही इलेक्ट्रोड्स यूज होता है? नहीं, अलग अलग इलेक्ट्रोड्स होगा, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट होता है. तो हर एक का पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा. हम इसके बारे में बात कर रहे हैं. ईएमएफ का मतलब क्या? पोटेंशियल डिफरेंस फॉर द कंप्लीट सर्किट प्रोवाइडेड बाय योर सोर्स. जैसे योर हार्ट इज योर पंपिंग ऑर्गन. Heart is a pumping organ. It sends blood against gravity. Of course, it needs to perform work. What is the power exerted by the heart? Work upon time. And if I say 1 joule corresponds to 1 beat, so how many beats you're having it for a normal heart? 72 beats. So 72 joules in 1 minute, 60 seconds. So what's the power exerted by the heart? Work upon time. 72 upon 60, 1.2 watts. तो वैसे यहाँ पे तुम्हारा your EMF is a pumping organ. ये pumping organ करेगा क्या? Will try to go forward. That means different होगा. तो हरेगा तो किसके ऊपर डिपेंड होता है? So it depends on to the material of the electrodes and nature of electrolyte. यानी यहाँ पे सिर्फ दो फैक्टर्स है, कौन सा इलेक्ट्रोड यूज करो, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज करो. सारा, now are you clear with this? Factors on which external resistance depends, factors on which internal resistance depends, and factors on which EMF depends. External depends on the malt, material of the conductor, area of cross section of a conductor, length of the conductor, and temperature. Factors on which internal resistance depends, its nature and concentration of the electrolyte, surface area of the electrodes, distance between the electrodes, and temperature of the electrolyte. Factors on which EMF of a cell depends, it depends on the material of the electrodes and nature of the electrolyte. Agreed students? इतना clear हुआ? Students, is it clear? हाँ या ना बोलो भाई, तो मैं आगे बढ़ू. ओके फाइन, थैंक्स वरुण. ओके, अभी देखो ये हो गया तुम्हारा. अभी हम क्या करेंगे, हम ये फॉर्मूला जो है ना वो कंसेप्ट करते हैं. ओके, कौन सा फॉर्मूला? करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंप्लीट सर्किट, I is equal to E upon capital R plus small r. ये हमें एक शॉर्ट, हमें इसका एक डेरिवेशन. और ये डेरिवेशन क्यों कर रहा हूँ स्टूडेंट्स? क्योंकि मैंने क्या बोला था, द टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल इज पार्ट ऑफ इट इज यूज्ड टू टेकन बाय इलेक्ट्रॉन, पार्ट इज बाय टेकन बाय आयंस. यानी ये क्या हो रहा है मालूम है? In case of current electricity students, we are simply going for law of conservation of electrical energy.
law of conservation of electrical energy is considered. यहाँ पे क्या है? What is law of conservation of electrical? Considering there is no dissipation of energy. ये assumption पे जा रहे हैं हम. तो इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से सुना स्टूडेंट्स. Total energy provided by the battery. Okay, total energy provided by the battery or an electric cell. ये कौन यूज कर रहा है? ये एनर्जी कौन यूज कर रहा है? Partially energy is used by conduction electrons in order to overcome external resistance. So out of the total energy provided by, student, is the video clear or not clear, students? Varun is again saying it's not clear. Students? Can you reply? It's not. Is it clear now, students? Clear, students? Is it clear? We'll do this last part, okay? We'll do this last part and then we'll wind up. Okay, we'll do this last part, okay? And then we'll wind up, okay? ये वाला सिर्फ हम कंप्लीट कर देंगे, okay? तो मैं क्या बता रहा था? Law of conservation of energy, total energy provided by the batteries partly used to overcome the external resistance by the electrons, and energy is used by ions to overcome internal resistance. Now students, मुझे ये बताओ, ध्यान से देखना, अगर मैं लिखता हूं E is equal to W upon Q, V is equal to W upon Q, small v is equal to W upon Q. Listen carefully, students. Can you see this properly? Is this clear? Just reply this. Yes, sir. Okay. So अभी बताओ, अभी ध्यान से देखना, अगर मैं W को सब्जेक्ट बना दो तो what is W will be? Sir, EQ. अगर यहाँ पे मैंने W को सब्जेक्ट बना दिया तो what exactly will be? Capital VQ. यहाँ पे मैंने W को सब्जेक्ट बना दिया तो ये क्या हो गया? Small VQ. Now listen students very carefully. W का मतलब क्या है? Work done by the battery. Work done by the cell. What is the work done by battery? What is the work done by cell? Is to provide energy. So can I say work and energy are correlated? Well, I've done work, energy, power. The amount of work done is equal to the energy provided. So देखो work and energy. इंटरनेट इतना गंदा क्यों आ रहा है? क्या? है? Yes. क्यों? अटक ही गए हो?
What happened? Oh no. So is it clear now? Okay, Jagannath says it's clear. Please, students, I'm answering the last part, yeah, please. The work done, okay? The work done we consider by the cell is EQ. The work done by the electrons to overcome the external resistance is capital VQ. Work done by the electrons and work done by the ions is small VQ. ये capital V क्या है? Terminal voltage. Small v क्या है? Drop voltage. What is Q? Charge externally and internally were same. If you recollect, मैंने क्या बोला था? दो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं बाहर की तरफ और वही दो इलेक्ट्रॉन्स अंदर आ रहे हैं, तो चार्ज कांस्टेंट है. स्टूडेंट्स, कैन आई यूज दिस रिलेशन फॉर वर्क डन? तो देखो Q कैंसिल हो गया, Q कैंसिल हो गया, Q कैंसिल हो गया. तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैन आई से टोटल पोटेंशियल डिफरेंस will be equal to terminal voltage plus drop voltage. यानी total potential difference is potential difference for external plus potential difference for internal. Using Ohm's law अगर मैं लेता हूँ तो can I put this as I into capital R? क्योंकि ये external के लिए जा रहा है. ये क्या लिखूंगा मैं? I into small r. ये internal के लिए गया. Can I remove I common? Can I remove I common? Yes, sir. So what exactly? I into bracket R plus small r. Did I get the formula? I is equal to E upon capital R plus small r. क्या ये फॉर्मूला क्लियर हुआ सबको? ऑल ऑफ यू ऑल? यस सर. एग्रीड. तो ये मैं बताना चाहता था कि ये तुम्हारा एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से टोटल एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द बैटरी इज पार्टली यूज्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स टू ओवरकम द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, पार्टली यूज्ड बाय आयंस टू ओवरकम इंटरनल रेजिस्टेंस. लेकिन यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट बोल सकता है सर आपने क्यू को कैंसिल क्यों किया? तो मेरा आंसर होगा कि चार्ज एक्सटर्नली और इंटरनली हमेशा कांस्टेंट रहता है. नेगेटिव पर यूनिट टाइम, यानी क्यू कांस्टेंट, तो क्यू को मैंने कैंसिल कर दिया. ई क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस फॉर द कंप्लीट सोर्स. वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस ओनली फॉर द इलेक्ट्रॉन्स टू मूव. स्मॉल वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस ओनली फॉर आयंस टू मूव. यूजिंग ओम्स लॉ, कैपिटल आई आर, आई स्मॉल आर, आई को सब्जेक्ट बना दिया और ये आंसर आ गया. डन स्टूडेंट्स? ओके. Yes, sir. Okay, we wind up over here only because it's an issue with the, I know what has happened all of a sudden. Okay, so students, next lecture will be continuing further right from here onwards. Okay, is that clear with all of you all? I have to copy down. Pardon? Okay, fine. Copy. And during the explanation, I'm not going to, because this is all your 10th standard part students. ये सब 10th में तुम लोग पढ़ चुके हो. It's only that I'm brief करना जरूरी था. And those students who are missing it out, I don't know about it. They must be knowing it. That's why they're missing it out. Sir, could you read out the inside the brackets? Energy used by conduction electrons. Energy used by conduction electrons to overcome external resistance. Okay, because externally electrons are moving. और ये है energy used by ions. By ions to overcome internal resistance. So when ions are flowing inside the solution, they are going to lose some energy. The cell is supplying the energy to them. Electrons are going to go through the copper wire. They are going to lose some energy because there will be collision between the atoms. So the battery or the cell is providing the energy. So the total energy provided by the cell or the battery is used by electrons as well as by the ions. And how do I come to the conclusion? Simple, V is equal to W upon Q. Work done, energy required. Work done, energy supplied. Work done, energy required. Work and energy are correlated to work. So मैंने EQ डाल दिया, BQ डाल दिया, small BQ डाल दिया, and this is law of conservation of electrical energy. Thank you, sir.
Yeah, what's it? This equation is only valid for, my dear, it's for parallel also we can consider, my dear. For parallel series के अंदर we can't go for more devices connected. Series के लिए provided only that the resistance are negligible. Any resistance, अगर small resistance होगा तो उसके लिए valid होगा. If I try to connect more resistance in series, in that case it won't be possible. ये तुम्हारा generally applicable for series as well as for parallel. लेकिन more number of series resistance cannot. Okay, students. So we wind up. Okay. Next lecture will be continuing further. Okay. Hello. Bye. Thank you, sir. Bye, sir. Well, all the best for tomorrow. Okay. Thank you. Bye.